आपने पिंक सिटी देखा होगा, और नाउ ये है आंध्र प्रदेश का पिंक रोड। टिल नाउ 500 किलोमीटर हम लोग कर चुके हैं। हैदराबाद अभी भी 320 किलोमीटर है, और हमें और 150 किलोमीटर आगे जाना है। रोड्स अच्छे हैं लेकिन स्पीड ब्रेकर है जो कि काफ़ी इरिटेटिंग है। हाईवे पे कौन स्पीड ब्रेकर देता है यार। ठीक है सादा मगा लाइटिंग की दुकान में मोटरसाइकिल की तरह है माता। चलो भाई इसको साइड दे देते, ये अपना काम करे। इससे पंगा लेने के लिए ताकत तो है लेकिन पेट्रोल नहीं है। चलो भाई जी ले तो अपनी जिंदगी। भाई देख लो ये ट्रक कैसा है। अबे जा, फट रही है क्या? खाली रहता है रोड दोपहर में, सो बहुत बोर भी लगता है। बट अगर आपका ग्रुप है 5 to 6 and everyone is communicator, then you will enjoy this ride. Unfortunately we don't have communicator because it's not in our budget. भगवान की कृपा से हमारे अच्छे दिन हैं जो कि पेट्रोल सस्ता है, बाकी सब आउट ऑफ बजट है। So guys, you can see this is Pench National Park and this is Hill Road. So much good. I like hill roads. पूरा रोड खाली पड़ा है, पूरे रोड पे अकेला ही हो। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरी अधूरा। अकेला हूँ मैं।
request them to do our both bike servicing on priority, as they finally agree and they took our bike for servicing. First they washed bike, then they did basic servicing. Additionally, I changed the air filter, also adjust the clutch cable, and yeah, clean the carburetor. Hello guys, वेलकम बैक। रात के 9:10 हो चुके हैं और हम लोग आगरा की तरफ जा रहे हैं। सो क्विक अपडेट, मॉर्निंग में हम लोग 8 बजे आराम से उठे। हम लोग सागर में स्टे किया था हमने कल रात को। वहाँ से 500 किलोमीटर था आगरा। एंड जैसे हमने एमपी से यूपी में एंटर किए, वहाँ पे सारे जानवर रास्ते पे घूम रहे थे। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू राइड विथ फुल फोकस, बट द स्पीड वॉज वेरी लो। उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 30 मीटर डाइवर्जन फेस करना पड़ा, 30 किलोमीटर डाइवर्जन फेस करना पड़ा, प्लस 20 किलोमीटर हमने ऑफ रोडिंग की, विच वॉज वेरी डेंजरस। मैं तो गिरते गिरते बच गया एक बार। बहुत बहुत ख़तरनाक रोड थे। सो इसके वजह से इतनी फटी पड़ी थी कि कैमरा ऑन ही नहीं किया था। सो अभी सोचा कि कुछ अपडेट दे दूँ। गुड मॉर्निंग, we are at Yamuna Expressway, my favorite highway, and we just left Agra. We reached Agra yesterday at around 1 a.m. Because of that heavy diversion, heavy traffic, and too much of off-roading. So at morning we started around 8:30. This is my favorite expressway because it's completely flat and it's look like a airport. You are riding on airport. Last year I was riding Delhi to Agra at night. आ जाओ भाई लोग चोर पुलिस खेलने। ओके, सो हम लोग पंजाब जा रहे हैं। जाना था पठानकोट, लेकिन पठानकोट से पहले ही हाईवे ब्लॉक कर चुके हैं किसी ने। सो हाईवे कम्प्लीटली ब्लॉक करके रखने की वजह से पुलिस वालों ने हमको गांव में से भेज दिया है। गांव में से भेज तो दिया है, रास्ता किसी को पता नहीं है। इवन पंजाब के लोकल है वो भी रास्ता ही ढूंढ रहे हैं। तो सब लोग रास्ता ढूंढ ढूंढ के खेल रहे हैं और हमें जाके पहुंचना है लवली यूनिवर्सिटी। गुड मॉर्निंग। सो वी लेफ्ट पंजाब एट 9 a.m. sorry, Jalandhar. Okay, and now we are at Jammu Kashmir. It's around 12:30. We completed 200 kilometers and we still behind 260 kilometers from our destination, that is Kargil.
टेम्परेचर ऑलमोस्ट -1 है यहाँ पे और अभी तक से 5:30 हुआ है एंड यू कैन सी द डार्कनेस हियर आई एम wearing an extra jacket inside my under jacket still cold and मेरे हाथों की तो पूरी बैंड हो चुकी है I cannot use clutch properly Good morning guys, and we are at Dal Lake finally. The temperature is 1 now, and in midnight there was a -4. I can see snowfall on my motorcycle in morning. That's the beauty of Kashmir.